You are sitting in a comfortable posture with hands on your knees in Gyan or Chin Mudra. The head, neck, shoulders, back, all in a straight line. Eyes and mouth gently closed. For some time, become aware of the whole body and let your awareness roam in the different body parts. You can also allow the awareness to roam on the awareness of the breath and awareness of the thoughts and emotions in yourself. Keep on observing within yourself about the body and the breath. To begin the session, we shall bring the awareness to our eyebrow center and visualize the form of Sri Ganesha at the eyebrow center. And maintaining your awareness on this experience, we shall chant the mantra Om 3 times altogether. Taking a deep breath. Shanti mantras. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Maintaining your awareness on the body and on the effect of the vibrations within your personality. Bring your palms together, rub them against each other. Experience warmth in the palms. Place them on the closed eyes. Feel the warmth radiating from the palms to the eyes. And then, when comfortable, move the palms away. Open the eyes. Namo Narayan. Hari Om. So, a warm welcome to all the Ganesh Sadhaks. We have gathered here on the 4th day to chant the mantras extolling the form of Sri Ganesha, and also because Ganesha, Vinayaka,
Mushaka Vahana, as he has many names. He has got a Virata Swarup, and we have to try and understand and comprehend that. He is Vidyadata, the bestower of knowledge, and striving for knowledge is one way of connecting to him and receiving his grace. And therefore, we are trying to understand the meaning of what we are chanting. So, to begin, let us orient ourselves in the body, in the mind, in the subtle body, in the pranas, towards Shri Ganesha. So that when we do the chanting, we are fully in orientation with him and his presence. We shall be doing Nadi Shodhan Pranayam. Ideally, it should be done with 1:4:2:2. However, it is not easy, especially for those who have not practiced Kumbhak. Therefore, those people who find it difficult to practice 1:4:2:2 should practice 1:1:1:1. One inhalation, one internal retention, one exhalation, one external retention. And with this ratio, we will do the Nadi Shodhan Pranayama. Internal holding is more, Swamiji. Yes, but if you have not, have you ever done internal Kumbhak and external Kumbhak? Yes, Swamiji. 16 counts. Yeah. Yeah. So, fine. So, you have used 1:1 ratio, right? Yeah, 1:2. Like, suppose 4 counts if we take inside, 16 holding, 8 exhaling, and 16 holding. 16 holding. No, you should not do 16 holding. You should do 8 holding. So then you can do 1:4:2:2. But for those people who, instead of doing it with the count of the number, we have to try and do it with the mantra. So one mantra, Om Gam Ganapataye Namaha. 4 mantras, Om Gam Ganapataye Namaha. 2 mantras exhaling, Om Gam Ganapataye Namaha. 2 mantras holding out, Om Gam Ganapataye Namaha. That is the form which we should do. It's not always possible for everybody, for whom it is comfortable, because we have to understand that in pranayam, we have to be comfortable. In asanas, we can push ourselves a little bit beyond our capacity and increase. But Swami Niranjananandji always mentions that in pranayam, you should do a little bit less than what you feel you are able to. There should be no discomfort when you are doing pranayam, because you are playing with the pranas, and excessive activation of pranas can create some difficulties. So therefore, a little bit less than what we feel we can. So those of you who can should go for 1:4:2:2, but others should practice 1:1:1:1. Get ready for Nadi Shodhan Pranayam. Eyes are gently closed. Hands on your knees. The back straight. Shoulders, head, neck, and the back in a straight line. Eyes gently closed. Bring your hand in Nasagara Mudra and place it on the forehead, the index and middle finger on the forehead, thumb for the right,
and bent ring finger for the left. Close the right nostril. Breathe in and out through the left nostril. Use the mantra, one inhalation, one exhalation, so that you get familiar with using mantra as the count. So inhale Om Gam Ganapataye Namaha. Exhale Om Gam Ganapataye Namaha. And continue this for one mantra for 2 to 3 times. Practice the same thing for the same number of rounds on the right nostril. Again, close the right, open the left. Get ready for alternate nostril breathing, Nadi Shodhan, Pranayam. Start inhaling Om Gam Ganapataye Namaha. Internal retention. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Breathing out right. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Hold external retention. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Inhale right. Om Gam Ganapataye Namaha. Hold. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Exhale left. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Hold. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Breathe in from the left and continue for 3 more rounds at your own pace and capacity. And now complete your practice. Bring your hand down.
Mentally get ready to take the sankalpa, the 3 coordinates, the activity to be undertaken, the incremental chanting of the Atharva Shirsha. The objective, Sarve api sukhinas santu, Sarve santu niramayaha, Sarve bhadrani pashyantu, Ma kaschid dukkha bhag bhavet. If you have any personal objective, you can add it at this point. Remembering your Guru and Ganesha. Feel their blessings for your sankalpa. To begin the practice, we shall insulate ourselves from the world and any psychic, mental, emotional, or physical disturbances during this chanting using the nyas. Just keep on listening to this nyas taking place and mentally become aware of that part of the body. Om Gam Angushtabhyam Namaha. Om Gim Tarjanebhyam Namaha. Om Gum Madhyamabhyam Namaha. Om Gaim Anamikabhyam Namaha. Om Gaum Kanishthikabhyam Namaha. Om Gahaha Karatalakaraprishtabhyam Namaha. Om Gam Hridayaya Namaha. Om Gim Shirashe Swaha. Om Gum Shikhaya Vashata. Om Gaim Kavachaya Hum. Om Gaum Netratrayaya Vaushata. Om Gahaha Astraya Fat Iti Digvandhaha. Now we shall chant the Avahan mantra of Sri Ganesha to invoke his presence. Open your eyes and get your documents ready. Kharvam stulatanum gajendra vadanam lambodaram sundaram prasyandan madagandha lubdha madhupa vyalolagandasthalam dantaghata vidaritari rudirai sindura shobhakaram vande shailasutasutam ganapatim Siddhipradam Kamadam. Om Lam Pruthivyatmakam Gandham Kalpayami. Ham Akashatmakam Pushpam Kalpayami. Yam Vayavyatmakam Dhupam Kalpayami. Ram Agnyatmakam Deepam Kalpayami. Vam Amrutatmakam Amrutamaya Mahanaivedyam Kalpayami. Sam sarvatmakam sarvopachara pujam sankalpayami namaha. We shall now chant the Atharva Shirsha 3 times. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Deva. Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha. Sthirairangai stushtvagum sastanubhi vyashema devahitam yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhashravaha. Swasti na Pusha Vishwavedaha. Swasti na Starksho Arishtanemihi. Swasti no Bruhaspatir Dadatu. Om Shanti Shanti Shantihi.
अथ श्री गणेशाथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वत्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः पञ्चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः। स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्ता आसि, त्वमेव केवलं धर्ता आसि, त्वमेव केवलं हर्ता आसि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः पञ्चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः। स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता असि त्वमेव केवलं धर्ता असि त्वमेव केवलं हर्ता असि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं ऋकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षमयोदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेतते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाम मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षं शिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यसि स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यां मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यः समिर्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्ध भवति स सर्वविद्ध भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Keeping your eyes closed, feel the presence of Shri Ganesha
Feel the effect of the vibration of the mantras working across the body wherever there is presence of Shri Ganesha, which in fact means the whole body. And then integrating this experience within yourself, we shall release the energy which we had requested to come for the chanting after removing the insulations as we have termed. Om Gam Hridayaya Namaha, Om Gim Shirishe Swaha, Om Gum Shikhaya Vashata, Om Gaim Kavachaya Hum, Om Gaum Netratrayaya Vaushat, Om Gahaha Astraya Fata, Iti Digmokaha, Guhyati Guhya Goptratvam, Gruhanasmatkrutam Japam, Siddhir Bhavatu Me Deva, Tvat Prasadan Maheshwara, Visarga Bindu Matrani, Padapadaksharaणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर ओम Become aware of your body and then slowly move the fingers of the hands, of the toes, move the neck from side to side. And once the awareness is fully in the body, then slowly open your eyes. Hari Om, Tat Sat, Namo Narayan. So, were you able to try and maintain the awareness of Ganesha during the day? I had suggested for 5 breaths every hour to try and maintain the awareness of his name. Have you been able to do that? Some have. Yes, boliye Harish ji. Not fully. I could not do it the whole day, but I could do it in between for a couple of hours. 1 or 2 hours I missed, then suddenly realized that. But overall thought of Ganesha has been there. But with doing the breathing and then bringing it up could not be done the whole day. That's okay. That is fine because you see there are lots of commitments. But as and when you became aware, you have brought your mind to that and tried to. Yes, yes. That is very good, very nice, because that helps in integrating this energy which we are generating. You see, this is like a electric generation station. The electricity is being generated. If we don't store it into the battery, that electricity will be dissipated away. Once it goes into the grid, it is gone. It is not going to just stay around. So therefore, we have to try and integrate it into ourselves. So that will help a lot. I'm very happy to hear that. Acha hai. Today we will speak of the meanings of the next verses. But before we go to these verses, there's something which I would like to discuss with you and ensure that we all are on the same page. You see, the
Ganpati Atharva Shirsha Upanishad. This is a chanting which is composed or which has been formulated, which has come forth. Nobody has sat down, thought about it intellectually. Okay, 2 plus 2 is equal to 4. Then this happens, that happens, that happens. No, that is not the way Upanishads, especially this Upanishad, was composed. The composer has got an experience, and that experience has translated into a spontaneous outburst of a set of verses in specific structure. This is the Ganpati Atharva Shirsha. To give you a slightly different example, but which I hope is a bit more familiar. I'm sure you all know the word Eureka. Eureka, Eureka. I'm not speaking about the Eureka Forbes machine, but I'm speaking about the word Eureka, the Greek word Eureka. Does anybody know the meaning, and does anybody know why it has become so famous? Yes, because Aristotle was thinking about something, so a thought, and when he suddenly discovered it, he ran out nude, talking Eureka, I found it, I found it. Yes, I have it, I have it. The only difference is that it's not Aristotle, it was Archimedes. Sorry, Archimedes. I'm so sorry. Yeah. I'm so sorry. I mean, this Yes, is. yes. So, Archimedes and. About the Archimedes principle, actually. Yes, perfectly right. The Archimedes principle. There is a very nice story about it, and the story goes somewhat this way. The king of Syracuse, he had got a beautiful crown made for himself, and it was supposed to be made of pure solid gold. He received the crown, he looked at it, he tried it on. Something did not sit well with him. He had a feeling that the goldsmith has not been completely honest. He has added some mixture in it. But the crown was perfectly to the specifications, fitted his head, size, everything was correct. He could not get rid of this feeling that no, the goldsmith has tried to take us for a ride. And in those times, Archimedes, he was the greatest scientist around at that point of time. And he was also in the court of the king. So the king called upon Archimedes and said that, look, you are a man of science. You are able to divine so many things and you tell so many beautiful things. Please find out if this crown is made of pure gold or is it made of some admixture. Archimedes was caught up with that idea. He has been thinking long and hard, thinking and thinking and thinking. Nothing was coming up. He was not able to get an answer. While thinking, then he said, okay, come on, let me go and have my bath. In those days, there used to be a bathtub, and that bathtub would be filled with water and the person would go in and take his bath. So he went in for his bath, and still in his mind, the gold crown and the request of the king was playing around.
as he entered the bathtub and sat down, suddenly he noticed something which had happened every day of his life. As he sat down, some water spilled out. And in a moment, in a flash, it struck to him. The amount of water which has flown out is equal to the weight of the person who has gone in. And he said he has got it. How he can prove it, if it is pure gold or not. He was so taken up by that idea, he forgot everything else. And he ran in excitement to the king. I have it, I have it. Eureka, Eureka. He had forgotten that he is nude. And when he went to the court and he started telling, then suddenly he, oops, what have I done? And then whatever would have happened, we can all imagine. The point is, when you get this Eureka movement, then there's an outburst of energy within you. It is a very similar experience which the author of the Upanishad has had. He must have done his sadhana and he experienced Ganesha in all his complete splendor. And when he saw that, spontaneously verses flowed out. And if we have ever tasted a sweet which is just divine, we know, or something which touches our heart very, very closely, we just don't say, oh, it's so nice, but we go on saying it 2-3 times. And this is exactly what has happened in this Upanishad. You will see that the author is speaking of, oh, Lord Ganesha, you are God, you are this, you are that, you are everything, you are everywhere, you are all. And he repeats this a couple of times because he is so overwhelmed by that moment and that experience that it repeats itself. So this is the subtle point which we need to understand. We will go through the meanings now, but we have to understand that this, what is being spoken of, we are understanding it, comprehending it intellectually. हम इसे बुद्धि के स्तर पर समझ रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि के स्तर पर समझने की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है. जिस व्यक्ति ने ये उपनिषद लिखा, उसने बुद्धि से बैठ करके, सोच करके, 10 जगह से उठा करके, लिख करके, नहीं 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 नहीं, उनको वो अनुभव हुआ और वो इतना तगड़ा अनुभव था कि सब उनके होश उड़ गए, एक दूसरे दुनिया में चले गए. और उस स्थिति में जो ध्वनि उत्पन्न हुई है, या वो ध्वनि जो उनको प्रतीत हुई, जो अनुभव हुआ, वो ध्वनि, वो कहते हैं श्रुति. वो ये ध्वनि है. श्रुति का महत्व हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो उसी पर चला जाएगा. तो ये आपको समझना है कि इसको आपको अनुभव करने का प्रयत्न करना है, केवल सोचना नहीं. हम तो केवल सोच ही सकेंगे, लेकिन सोचते सोचते थोड़ा सा अनुभव के रूप में सोचने का प्रयास करना है, तब इसका सही मतलब हम लोगों को अंदर से प्राप्त होगा. तो कल हम लोगों ने तीसरे श्लोक तक गए थे. आज उसके आगे चौथा श्लोक, त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मयः त्वं आनंदमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चित् आनन्दात् अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. त्वं वाङ्मय, त्वं मतलब आप,
यू, आप कैसे हैं? वांगमय, वाक वाणी, वाणीमय मतलब पूरा ज्ञान आप में है। अक्षर, वो जो वाइब्रेशंस हैं, 52 वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस आप में हैं। आप उससे पूर्ण हैं। आप चिन्मय, चिन्ह यानी चैतन्य, चैतन्यमय है। सब चैतन्य आप में है। आप त्वम आनंदमयः, त्वम ब्रह्ममयः। आनंदमय, हमारे व्यक्तित्व को सत चित आनंद कहा गया है, जो हमारा इसेंस है। जैसे गहना है, गहना अलग 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 डिजाइन का होगा, लेकिन उसका इसेंस सोना है। उसी प्रकार से हम लोगों का जो मूल तत्व है, जो इसेंस है, श्रुतियों ने कहा है सत चित आनंद। इसको हम बाद में और व्याख्या में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन हमारा वो स्वरूप है। उस आनंद में अभी उसकी बात हो रही है कि आप आनंदमय हैं, कि आपका अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि आप पूरे मतलब जितना दुनिया का आनंद है वो सब आप में है। आप उसके स्रोत हैं। त्वम ब्रह्ममयः, ब्रह्मन जिसको कहते हैं वो आप में है। त्वम सच्चित आनंद, आप वही सच्चिद आनंद है। केवल आनंद नहीं है, केवल सत नहीं है, केवल चित नहीं है, आप सच्चिद आनंद है, सब चीज है। और केवल उतना नहीं, आप अद्वितीयोसी, यू आर यूनिक, अनपैरेलल्ड, एकमेव अद्वितीय, दूसरा आपके जैसा कोई है ही नहीं। त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, जो पर ब्रह्म कहते हैं कि जो शुद्ध चैतन्य है, सच्चिद आनंद, जो सब चीज का आधार है, वो आप हैं। त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, आप ज्ञानमय हैं, आप विज्ञानमय हैं। ज्ञान यानी पराविद्या, अपराविद्या, और विज्ञान यानी पराविद्या, हायर नॉलेज। आप नॉर्मल नॉलेज भी है जो सेंसेस से समझ में आता है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, सब चीज, मैथमेटिक्स सब, और आप पराविद्या भी है, सब चीज आप ही है। ये अनुभव जो रचयिता थे उनको ये अनुभव हुआ। अगर आप देखेंगे तो इसी विचार को अनेक बार 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 कहा गया है। जिस जिस प्रकार से हम बोलते हैं वाह सुंदर, अद्भुत, आहा, अद्वितीय है, कोई मिठाई चीज को हो या किसी का भी अगर हमको तारीफ करनी है तो इसी प्रकार से एक शब्द से नहीं बोलते हैं हाँ अच्छा है। जब उस भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं तो उद्गार निकलते हैं। ये वो उद्गार हैं, ये अनुभव के उद्गार हैं। और इसीलिए अनुभव के उद्गारों को हम लोगों को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि अनुभव के उद्गारों में एक अलग ऊर्जा होती है, एक चैतन्य होता है जो ट्रांसमिट हो सकता है। हमको वो ट्रांसमिट पकड़ना है। शब्द के ऊपर ज्यादा जाने से कोई मतलब नहीं है, हम समझे या नहीं समझे, लेकिन वो तत्व मिल जाए, सब मिल जाएगा। जैसे गुरुदेव कहा करते थे, रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से कुछ नहीं होता है। रसगुल्ला बोलने से उसका अनुभव नहीं मिलता है कि वो मीठा होता है तो ऐसे रहता है तो वैसे रहता है ना, उसको केवल खाना पड़ता है। और जब एक बार तुम खा जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ओ ये रसगुल्ला है। और अगर तुम किसी को पूछोगे रसगुल्ला कैसे है, बोल नहीं सकेगा। कोई भी व्याख्या करे वो अनुभव से आपको दूर ले जाता है, थोड़ा ही दूर। गुड़ मीठा है, रसगुल्ला मीठा है, तो
गुड़ इज इक्वल टू मीठा, रसगुल्ला इज इक्वल टू मीठा, देयरफॉर गुड़ इज इक्वल टू रसगुल्ला। बुद्धिस्ट का ये है, लेकिन अनुभव बतलाता है नहीं, अलग चीज है। जो अनुभव होता है वो वाणी में बतलाया नहीं जा सकता है, वो फीका पड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों को उस अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करना है। ओ फुल अनुभव मिल जाएगा तो हम तो एक दूसरे स्तर में चले जाएंगे, लेकिन उसका 100 भी अगर हमको पता चल जाए तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारे जीवन में सवाल है, जो हमारे जीवन में प्रश्न हैं, सबके जवाब मिल जाएंगे, सब सरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम में एक नव चैतन्य मिला है। शिवाजी राजे, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजे हुए, स्वतंत्रता संग्राम रहे। उनके बारे में बतलाते हैं, जब छोटे थे तो उनके जो शिक्षक थे वो बाद में बतलाते थे कि हम तो इनको एक सरदार के पुत्र के रूप में देखे और उनको सब सिखलाते गए कि भाई अपना ये जो आपको मिला है, आपके पिताजी को मिला है, उसको आपको चलाना है और ठीक ठाक रखना है। वो तो आदिल शाह के गुलाम थे, आदिल शाही के अंतर्गत ये क्षेत्र था और उसके वो सरदार थे, मालिक नहीं थे। लेकिन बतला रहे थे एक, लेकिन उनके अंदर से एक दूसरा चीज निकलते जा रहा था। सामने वाले ने कुछ एक बतलाया, लेकिन अंदर में ग्रहण दूसरा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अलग थी। दिखाया था कि किस प्रकार से तुम अच्छा सरदार बन सकते हो, किस प्रकार से अच्छे से गुलामी में पड़े रह सकते हो और उसमें तुम खुश रह सकते हो, यही सोच करके सब बतलाया था। लेकिन इनको कुछ अलग समझ में आया। क्यों? क्योंकि देखने वाले की नजर अलग थी। हम लोगों को वो नजर प्राप्त करनी है। कल हम लोग बात कर रहे थे, ये परिस्थिति, ये जो हमारा कोविड का हंगामा चल रहा है उसके विषय में पूरे जीवन को उलट दिया है। जो चीज हम सोचते थे कि जीवन के आधार स्तंभ हैं, एक सेकंड में उखाड़ करके फेंक दिया। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें चुनौती को अगर सही रूप में उसको प्राप्त करना है तो हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। जो हम सोच रहे हैं कि ये भगवान ये क्या हो गया, नहीं, वो भगवान आपको वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं, बेटा सामने में गड्ढा है, मत जाओ। पहले हमको थोड़ा सा हल्के से कंधे पे हाथ लगा करके बोला उठो बेटा, नहीं उठे, तो दोबारा किए, थोड़ा जोर से हिलाए, उठो बेटा, नहीं उठे। अब तीसरे बार उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया है जोर से, उठो। अगर अभी हम नहीं उठे तो आगे जाकर के हमारे समाज में, हमारे पूरे सिविलाइजेशन में, सभ्यता में विनाश आ सकता है, पतन हो सकता है। ये उसकी घंटी है, जागो। तो अगर हम लोगों को ये समझ में आएगा तब एक कदम हम पीछे हटेंगे और देखना शुरू करेंगे कि हम क्या गलत कर रहे थे। हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, नहीं, कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं हम नेचर के, प्रकृति के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। वो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को हमको समझना होगा। और जब उस दिक्कत को समझना शुरू करेंगे तब हमको पता चलेगा
कि ये हमारे लिए एक मौका है, एक सुनहरा मौका है जीवन को परिवर्तित करने के लिए। क्योंकि जो चीज इसके पहले या हो सकता है इसके बाद में 10 साल लगेंगे परिवर्तन के लिए, इस समय अगर हम वो परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो चुटकियों में परिवर्तित हो जाएंगे। अनेक लोगों को इसका अनुभव हुआ है। There are many people who have become millionaires. पैसे की ही बात करते हैं, थोड़ा सा माया की बात करते हैं। People who have become millionaires in this time because they found an opportunity in this distress. We don't have to be parasites and make money out of other people's sorrow. I'm not saying that. But there is an opportunity in here to change, to become better. If we start thinking about this, then we will see that there are less hassles. Another thing we have to think, this is the situation which is there in front of me. They say, be positive. What does be positive mean? Does be positive mean, ये कोरोना आया है ना, निश्चित रूप से भगवान ने कुछ सोच समझ करके भेजा होगा, हमको सहन शक्ति करनी है, हमको ये सीखना है, वो सीखना है। वो एक विचारधारा हो सकती है। That can be one way of thinking. I have to improve my capability to bear, to persevere. But no, as a yoga sadhak or as a spiritual aspirant, your thought has to be different. I was just discussing, I think it was, anyway, I was discussing with one person and he said that I am trying to learn one subject, but perhaps nature is giving us another subject to learn. I think that I am in the class of physics, but actually I am in the class of chemistry. And when I am in a class of chemistry and I am thinking about physics, there is always disharmony and oh, something is wrong. That is what is there. When you are in the class of chemistry, listen what is going on. Okay, this is what is going on. Then you will come to know. Be positive. What is the situation? What can be done? What is it that I can make out of this? How can I benefit myself from this situation? Yes, we have always thought, this situation has come and I have lost everything. I am now in crisis. Everything. Yes, we think about this, but we hardly think from this situation, what can we learn? What is this situation trying to teach us? ये हम लोगों को सीखना है। अगर हम आध्यात्मिक लोग हैं, अगर हम साधक हैं, अगर हम योग के मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए, इस दृष्टि से परिस्थिति को देखना चाहिए। जब ये करेंगे तब हम लोगों को धीरे धीरे रास्ता मिलते जाएगा। हर दिन में जब कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, तब निश्चित रूप से साधारण योगाभ्यास से हम लोग अपने भावना को कंट्रोल में रख सकते हैं, स्थिति से निपट सकते हैं। वो सब चीज किया जा सकता है, वो होता है और होना भी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, सब चीज होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति जो हम लोग अभी हैं, वो स्थिति साधारण स्थिति नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे ऑफिस में आने वाला रोजमर्रा का प्रॉब्लम, इसके साथ मत जोड़िए। This is a once in a lifetime opportunity which we are getting and we have to make use of it. How? That we need to experience. We will discuss a little bit of that from time to time. But to be able to actually understand this, we need to have
a higher understanding. And that higher understanding comes to us through yoga, comes to us through raising your capabilities. That is what the Ganesha Tattva stands for. The ability to perceive things in a different manner, ability to analyze it in a different manner and come up with a solution जो थोड़ा सा हटके है, भेड़ चाल के हिसाब से नहीं, हट करके सोचना पड़ता है। वो कैसे करना है वो हम लोगों को समझ में आ रहेगा और वो हम लोग समझाने से नहीं समझ सकेंगे, अनुभव से ही हो सकेगा। उस चीज के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। उसका ही स्वरूप नाद योग या गणेश आराधना है। So this is what is in a nutshell about Ganesh Aradhana and about the question which was asked. Before we conclude, if you have any doubts or any questions, we can spend some 5 to 10 minutes trying to clarify. So then let us conclude today's session. Please sit in a comfortable posture. Hands on your knees in Gyan or Chin Mudra. The head, neck, shoulders, back, all in a straight line. Eyes and mouth gently closed. Awareness on the effect of the mantra chanting which we have done. The mantras which we have chanted leave an impact on us. Try to recollect that impact and try to focus your energies and awareness on that impact. Maintaining the awareness of that experience, we shall chant the mantra Om 3 times altogether. Take in a deep breath. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namo Narayan. Hari Om Tat Sat. Rub your palms gently. Place them on the closed eyes. Feel the warmth radiating to your eyes. And then when you're comfortable, move the palms away. And then open your eyes. Let us meet tomorrow in the morning, 6 o'clock, continuing our Ganesh Aradhana. Namo Narayan. Namo Narayan.